Hello, hi, good morning, very good morning to all of you guys. Welcome to Oliveboard. This is Aditya. I hope I am audible and visible to all of you guys clearly. Check कर लीजिए पहले. Audio and picture quality, everything is fine. We can start the session immediately after that. 16th of July के current affairs का discussion रहेगा आज session में हमारे पास 16 जुलाई 2024. So start करेंगे session को with the news highlights. देखते हैं कि आज की news में क्या चीजें हैं खास. ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है, मैंने खुद भी सुनकर चेक कर ली. न्यूज नंबर 1 रहेगा आपके पास रिगार्डिंग डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइट. एंड डू यू नो दैट डब्ल्यूपीआई डेटा रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर बताइएगा चैट बॉक्स में. बोलेंगे सर मैं हम लोग सुबह सुबह आते हैं गुड मॉर्निंग किए बिना ही क्वेश्चन पूछने लगते हैं. तो ठीक है, चलता है, बट अच्छा होता है ब्रशअप करते रहना अपने नॉलेज को, राइट? So inflation data for the month of June 2024 is available now. The inflation rate according to WPI is 3.36%, which is high. If we'll check it in the past few months, it is very, very high. So we'll talk about it in detail. और WPI का डेटा रिलीज कौन करता है? अगर शॉर्ट में बता पाए तो बहुत अच्छी बात होगी. GPIIT जॉय का आंसर आया, दैट इज करेक्ट, वेरी गुड. Second important news है from the bank, State Bank of India. How many of you are targeting State Bank of India in the year 2024? Raise your hand. कि सर यही है मेन टारगेट, तो इसी को हिट करना है. In the year 2024 I should get the job in this bank. तो कितने लोगों का टारगेट है? Raise your hand quickly. So State Bank of India increases the benchmark that is called MCLR rate, marginal cost of fund based lending rate. तो MCLR क्या होता है, कहां पर लिंक होता है? इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस एज वेल. लाइक आई हैव द होम लोन, सो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट मी एज वेल इफ आई हैव होम लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नॉट. तो वो वाली चीजों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. MCLR क्यों बढ़ाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन द मार्केट. सो SBI इंक्रीज द MCLR rate, which is a benchmark rate, lending rate by the bank. Yeah. काफी कम लोगों का टारगेट है. अरे वाह, फिर ठीक है. मींस एवरीवन इन द सेशन डू नॉट हैव टारगेट लाइक SBI. ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. एक्टिव रहा करो सुबह सुबह. हाँ, सोकर उठकर ऐसे TNA देखने मत बैठा करो. बी एक्टिव, एनर्जेटिक रहा करो जरा, तब मजा आएगा पढ़ने में. अगला पॉइंट है आपका रिगार्डिंग BSNL. BSNL is in news. Continuously it is in news. The reason is BSNL, that port back to BSNL, this is what was on trend, right? It was trending over Twitter also. So it was a trend that port back to BSNL. In between that, a new CMD of BSNL has been appointed. Mr. Robert J. Ravi appointed as the new CMD of BSNL. PK Parvar sir, who was leading the organization from mostly 8 to 10 years, from last 8 to 10 years, I am reading the single name, PK Parvar. So Mr. PK Parvar has been replaced by Robert J. Ravi as the new CMD of BSNL, going to create a good and important question for the examination, right? चलो, मतलब ठीक है. अब अच्छा लग रहा है देखकर जितने नंबर ऑफ हैंड रेज हुए हैं. एक और कंट्रोवर्सी चल रहा था रिगार्डिंग मिस्टर रजत शर्मा एंड द कांग्रेस पार्टी. वन ऑफ द स्पोक पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी पुट सम allegation. We can call it allegation until it is not proved in the court, in the Supreme Court, because the hearing is going on and everything is going on in the Supreme Court. So there was a trend which was also going on regarding Mr. Rajat Sharma. You guys are getting aware about it. I'm pretty sure that because of Twitter, Instagram, you are getting all these information. That is why in the TNA I don't share such information with you, and they don't come in examination also. So India TV head Mr. Rajat Sharma has been appointed as the head of Broadcasting Association of India, that is National Broadcasting Association of India. So we'll talk about it in detail. Prime Minister Narendra Modi inaugurated INS Tower in Mumbai. What is this INS Tower? Why it is so important? It is a secretariat, that is headquarter of a particular organization. Which organization it is? Whose headquarter recently inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in Mumbai. So we'll talk about it. Haryana cabinet approved IT Saksham Yuva scheme to provide 5,000 jobs. They will also offer the stipend of 20,000. So people from Haryana, be ready. In the IT sector, your state government is targeting to provide the 5,000 jobs.
5,000 जॉब का टारगेट रखा है इन्होंने प्रोवाइड करने का, और स्टाइफन भी प्रोवाइड करेंगे 20,000 25,000 का। Mr. Amit Shah inaugurated PM Excellence College in all 55 district of मध्य प्रदेश। तो राज्य मध्य प्रदेश के अंदर हर एक जिले में, प्रत्येक जिले में, दैट इज हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो अमित शाह जी हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली ईच एंड डिस्ट्रिक्ट ही इज विजिटेड, he will visit only one place, that is Bhopal, and from there he have inaugurated all the 55 प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द स्टेट। तो 55 डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है उसको इनॉग्रेट किया है। मोस्टली द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी हु हैव इनॉग्रेटेड दिस। सो रिमेंबर द आंसर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, मिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड दिस। आते हैं एमसीक्यू रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, बोलिए ठीक है? यस, चलिए एक चीज और चेक कर रहा था मैं, कि मॉर्निंग व्हेन आई केम लाइव देयर वर अराउंड 30 पीपल दोज हु वर वेटिंग फॉर द सेशन एंड लाइक्स थे 9। इट विल नॉट टेक मोर देन 1 सेकेंड फॉर यू टू लाइक द सेशन, प्लीज डू दैट, कर दिया करो, नॉट इन बिटवीन द सेशन, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू गाइज इन बिटवीन इट, बट स्टार्टिंग में आते हो जब कर लिया करो थोड़ा सा, या लास्ट में, ठीक है? चलो, so which of the following statement about the agri fund startup for the rural entrepreneurs that is called agri sure is correct? is correct बोल रहा है, ठीक है? Point number 1 is the fund is managed by NAV Ventures which is a subsidiary of SIDBI. SIDBI का subsidiary है, wrong statement, it is a subsidiary of which organization? NABARD, नाबार्ड, नाबार्ड का जो सब्सिडरी है दैट इज नैब वेंचर्स, राइट? स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग, so 1 is wrong, 1 is wrong, 1 is wrong, that is not the answer. Now the fund, अच्छा 2 तो आंसर होगा नहीं इसमें अब, because only 2 will not be the answer. So fund designated for 8 years, तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं अब। So initial corpus of AgriSure is 750 crore with the equal contribution from NABARD, Ministry of Agriculture and other institution. So this is correct guys, ये वाला आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। 250 करोड़ का कंट्रीब्यूशन यहां पर लेकर चल रहा है, सो ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट क्लियर है? यस, 250 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन है, 10 ईयर है, करेक्ट है। इट इज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स, 8 ईयर्स नहीं है, 10 ईयर्स के लिए है ये, ठीक है? तो 10 ईयर है, and that is why the option number 2 is also wrong. So NAB Venture is going to hold it, fund manager for AgriSure. The fund is designated to operate for the duration of 10 years. NABARD, founded according to the Act of 1881, founded on 12 July 1982. अभी recently birthday निकल गया, मैंने मिस कर दिया, I think Sunday था उस दिन, इसलिए मिस हो गया होगा अपन से, right? तो 12th of July 1982 जो है, 12th of July 1982 को आपके नाबार्ड का बर्थडे था, और 1982 में फॉर्म हुआ था। काउंट कर लीजिए कितने साल का हो गया नाबार्ड। आगे आते हैं, हाउ मच हैव द टाटा पावर लेड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दैट इज डिस्कॉम कंपनीज इन्वेस्टेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन नेटवर्क अपग्रेड इन ओडिशा ओवर द पास्ट 3 to 4 years? अगले 3 से 4 सालों में, इन द नेक्स्ट 3 to 4 years, हाउ मच अमाउंट? So there is around, have invested है actually, not in next, it is already invested in the last, in the past, हाँ next नहीं है, past है, वही past 3 to 4 years, तो पिछले 3-4 सालों में 4,245 crore रुपए invested, already this amount have been invested to increase the network of electricity, availability of electricity within the state. Which state? Odisha. 3 pointers question it is. Only 3 statement you need to remember. 4,245 crore by Tata. State is Odisha. Odisha. Which sector? Discom. बस इतने में आंसर बन जाएगा आपका। Which steel company have signed a pact with Punjab National Bank to provide the concessional loan such as home loan, car loan, education loan to its employee? कौन सी स्टील कंपनी है जिन्होंने अभी रिसेंटली कोलैबोरेशन किया पीएनबी के साथ? अंडर दिस कोलैबोरेशन पीएनबी इज गोइंग टू प्रोवाइड द लोन
at the concessional rate of interest to the employees of this steel company, steel manufacturing company. Correct answer is Steel Authority of India Limited. Steel Authority of India Limited. इन्होंने कोलैबोरेशन किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ रिसेंटली. सो पंजाब नेशनल बैंक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, सेकंड लार्जेस्ट बैंक आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज पर द वॉल्यूम एंड द कस्टमर साइज एंड द ब्रांच साइज ऑफ बैंक. Mr. A.K. Goyal sir is the current CEO of Punjab National Bank. Recently, Punjab National Bank was in news to launch safety ring product also. इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले safety ring नाम का भी एक product launch किया था. Which country will soon offer the convenient of making payment via UPI to the Indians visiting to that country? So when we will be visiting to this nation, with the support of QR code, we will be able to make the payment. For this purpose, already there is a collaboration which has been done between India, that is National Payment in NPCI, National Payment Corporation of India International Arm, with QNB. Correct answer is Qatar. Yeah, correct answer is Qatar. तो कतर के साथ में कोलैबोरेशन हुआ है. Chairperson of NPCI is Mr. Ajay Kumar Chaudhary. CEO is Mr. Dileep Asbe. The CEO of International Arm of NPCI is Mr. Ritesh Shukla, and Nupur Chaturvedi ma'am is the CEO of NPCI Bharat Bill Payment Limited. यहाँ पर आपके पास pointers हैं regarding NPCI. Do get it from the PDF. PDF जरूर download कर लीजिएगा. It will be available on the Oliveeboard application, so you can download it from the app immediately after the session. If you are unable to find it, then you can connect with me over the Telegram. Aditya Sir GA is my Telegram ID. तो आप connect करिए. I'll help you out to download the PDF. What is the recent approval did RBI given to the Geo Financial Services? So Geo Financial Services recently got an approval from the Reserve Bank of India. What is this approval? Conversion of bank from the NBFC, approval to run full-fledged bank now, conversion from a core investment company to a non-bank financial company, conversion from a non-bank financial company to a core investment company, and none of the above. What is the correct answer? Yeah, what is the correct answer? So option number D is correct. We know that from an NBFC category, it is going to be converted as a core banking companies. Although core banking companies are also NBFCs, but as per the newspaper headlines or everywhere, it was written in the same format that RBI approved to convert from a NBFC to core banking, core investment companies. So core investment companies are also specialized NBFCs. ये एक तरीके के स्पेशलाइज्ड एनबीएफसीज ही होते हैं विद द मिनिमम वर्किंग कैपिटल ऑफ 100 करोड़ रुपए. तो यहां पर कंडीशन होता है दैट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी शुड हैव द मिनिमम वर्किंग कैपिटल. देखो यहां बोला ही जाता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज आर स्पेशलाइज्ड एनबीएफसीज विद द एसेट लार्जर देन 100 करोड़ रुपए. तो दीज आर अ टाइप ऑफ एनबीएफसीज, अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ एनबीएफसीज. So that is why the statement is correct, from NBFC to core investment company. I hope it is clear, right? Yes, not less than and 100 करोड़ रुपए, दोनों पॉइंट्स करेक्ट हैं. आगे आ जाइए. Which day has been decided by the central government to observe as संविधान हत्या दिवस because of the event of 1975. The event everyone knows that कि जो आपका इमरजेंसी है that was imposed in 1975 on 25th of June. That is why 25th June from the next year will be observed in the form of Samvidhan Hatya Divas. It is announced by Home Minister Amit Shah. आते हैं होमवर्क के क्वेश्चंस की तरफ, क्विकली देख लेते हैं. जियो पेमेंट बैंक a joint venture of Reliance Industries and which of the following bank? तो करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो जियो पेमेंट बैंक जो है ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है. SBI even decreased their investment to 23% approximately, if I am not wrong. पहले 30% था, SBI ने इसमें कम करके approximately 23% किया. You guys also check it once. ठीक है. Next था आपके पास which of the following code used for the clearance process of check and other documents? So that is called MICR, Magnetic Ink Character Recognition Code. So at bottom of the check you will be able to see a 9-digit code. आपको 9 digit का कोड देखने के लिए मिलेगा like this. Like this. Under this, first 3 digit represents city, next 3 digit represents bank, and last 3 digit represent branch. City, bank, and branch. So this code is called MICR, Magnetic Ink Character Recognition Code. The first 4 digit of MMID. MMID is called Mobile Money Identifier Code. Mobile Money Identifier Code is useful to transfer money in IMPS.
IMPS में हेल्पफुल होता है फंड ट्रांसफर के लिए, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस. So MMID is a 7-digit code in which first 4 digit denotes the bank and bank of the user, means bank name, and last 3 digit identify the user account. Bank and account को identify करता है. There is no role of branch in this case. So directly bank, first 4 digit identify bank, last 3 digits are actually the last 3 number of your account number. तो वो account number को identify करते हैं. So Harika, Shivi, Sarita, Swaroop, Darshan, Neha, Hitesh, Aman, Simran, Techni Genius, Vedai, Sushmita. Thank you guys. Thank you for answering the questions. And Saba, Lucky, Divya, Priyanka, Garima, Himani, S. Roy, Shiva, Diva, Manas, Jaggi Durga Rao ji and Harsha. Homework के questions ले लीजिए कल के लिए. Reserve Bank of India recently formed a committee for mitigating the financial fraud. Who is the chairperson of that committee? RBI ने एक कमेटी बनाई है फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोकने के लिए, डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड्स को. Who is the chairperson of that committee? Second है, which organization won Risk Manager of the Year Award 2024? Third है, FI recently got the license of RBI from the RBI for the license running as NBFC. What is the minimum capital requirement of NBFC? तो ये पॉइंट हो गए आपके पास. NIACL SO का बैच और NICL SO एंड PNB क्रेडिट ऑफिसर, AO एंड PNB क्रेडिट ऑफिसर का बैच आपका लाइव है. NICL AO का भी लाइव है. ये इंटरव्यू बैचेस आपके पास लाइव है. यू नो दैट. ऑलवेज यूज कूपन कोड आदित्य टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड प्रिपेयर अंडर द पर्सनल गाइडेंस ऑफ आदित्य सर. आते हैं न्यूज पर. न्यूज नंबर 1 रिगार्डिंग इन्फ्लेशन. We know about what is the meaning of inflation. Inflation is increment in the rate of goods and services in the market. So when the retail prices get increases for us on which we are buying the product from market, that is called retail inflation increment or CPI inflation increment. Similarly, when the prices at the wholesale level, at the bigger level, like 100 kg of sugar, price increases in the market. So when you want to buy 100 kg, you will be able to find, oh, compared to before, now the price is high. So this is what the WPI inflation get increased. So WPI inflation in the month of June is high. So annual rate of inflation based on WPI number is 3.36% for the month of June. तो जून मंथ का जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो 3.36% पर आ गया है. काफी ज्यादा बढ़ गया एक्चुअली in the month of June. Major increases because of the price of food, manufacturing of food product, crude petroleum, natural gas, mineral oils, other manufacturing product, etc. तो इन सारी चीजों के कारण जो WPI है आपका वो इंक्रीज हुआ है. Now it is 3.36%. Yesterday we had a discussion around CPI inflation rate. So CPI inflation rate June 2024, find out the correct statement regarding this. Rural CPI inflation rate was higher than urban CPI inflation rate in the month of June 2024. Is it? Second one, the current rate of inflation in India is 5.08%. Third बोल रहा है, it is published by the Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry. आपको क्या करना है? आपको wrong statement निकाल कर बताना है, which is a wrong statement, which is not a correct statement. So option number 3 is not a correct statement. Option number 1 is right, 2 is right. First one is correct, that rural inflation rate was higher than urban, and the current rate of inflation in India as per CPI is 5.08%. The data of CPI released by NSO, National Statistical Office, releases the data of CPI का डेटा NSO रिलीज करता है. अगर हम यहां पर पॉइंटर्स देख लें, यहां से पिक कर लेते हैं डेटा, 3.36% ले जाकर फिल कर देते हैं यहां पर. So 3.36% is the inflation rate of WPI. If you will check from the month of Jan till now, means in the year 2024, it is the highest inflation rate. पूरे इस साल में ये आपका highest inflation rate रहा. Even in the last financial year, if you will check, it is going to be the highest inflation rate. So 3.36% आपका inflation rate रहा है WPI का for the month of June 2024. Data clear है? बोलो yes or no? Yes. Elections are over now.
चलिए वापस आते हैं. सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज पर बात करते हैं. वर्ल्ड बैंक, दिस इज द न्यूज विच गॉट रिपीटेड मल्टीपल टाइम. सो दिस इज द न्यूज, वी read it around 15 days back, 10 to 15 days back, and again and 15 or around 1 month back again. So there, I still remember 2 times this news I have covered, but it is coming back to the news again and again. It was there in the newspaper 2 days back, so I thought that why to miss? Let's take it again. So World Bank approved 1.5 billion loan for the low carbon energy. It is the second time World Bank approved 1.5 billion. Last time $1.5 billion loan was approved by World Bank in June 2023. So in June 2023, World Bank approved 1.5 billion and again World Bank is approving 1.5 billion. So this is the second time this amount is approved. दूसरी बार ये देखो second operational बोल रहा है, second operation to help India accelerating the development in the field of low carbon energy. Now the point is, they have a clear target that 450,000 metric ton of green hydrogen will be produced with the support of this 1.5 billion and 1,500 megawatt of electrolyzers per year for the financial year 24-25. So what this amount is going to do in India, that they have defined now. 15 days back, it was just announcement that World Bank is going to provide. Now it is approved. Now it is approved by the World Bank. तो 1.5 billion World Bank ने अब approve कर दिया है for the low carbon energy of India. So we have discussed about it. देखो ये मैंने पहले भी discuss किया, 1.5 billion dollar financing to help the low carbon energy. 1.5 billion first low carbon energy program was launched in June 2022. So this is second time World Bank is providing this amount. World Bank, Ajay Pal Singh Banga sir is president, Anshula Kant ma'am is CFO, Indermit Gill sir is the chief economist of World Bank. All are Indian. World Bank have total 189 members. 189 member. Norway was the last member of World Bank, joined in the year 2016. World Bank founded in the year 1944 according to the Bretton Woods Conference. India is the member of World Bank from initial on. शुरुआत से ही भारत जो है वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर रहा है. पॉइंट क्लियर है? बोलो यस और नो. ओके, आगे आ जाइए, अगले पॉइंट की तरफ चलिए. नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाइक द बेंचमार्क ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट को अभी जो एसबीआई है इसने इंक्रीज किया है. व्हाट इज द रीजन? रीजन बताता हूं आपको. इफ यू नो दैट Reserve Bank of India in a duration of 1 year increased the repo rate by 250 basis point. 250 basis point से increase किया था. Basis point. So 250 basis point was the increment in the repo rate which RBI have done during the span of 6 to 7 months. SBI, every bank is maintaining two type of minimum rate of interest. You can say that two type of benchmark rate every bank is maintaining. So what banks do, they follow one rate called MCLR, and another one is called external benchmark rate. External benchmark rate. So there are two rates. Both are minimum rate of interest. Both are the minimum rate of interest which are decided by banks according to the different loans. So this MCLR is linked with all the corporate loans, overdraft facility, cash credit facility. So all these are, even your credit cards, all these such type of commercial lending that is provided according to MCLR. External benchmark rate is another rate of interest, another minimal rate of interest. It is very simple. External benchmark rate is repo rate plus spread. Repo rate, whenever it will increase,
spread is same. For example, spread of bank is 2.5. Whatever the repo rate plus 2.5, that will be the rate of interest for that bank. तो वो हो गया बैंक का external benchmark rate. So this external benchmark rate is linked with the other loan like home loan, car loan, personal loan, education loan, agriculture loan. All these such type of are retail loans. They are linked with the external benchmark rate. I hope you are getting my point. बोलो yes or no. यहां तक का पॉइंट क्लियर है? यस. हाँ. MCLR rate is your MCLR is implemented from 1st of April 2016. 1st of April 2016. It is linked with the corporate loan. That is why apart from repo rate, spread, it also keep the component of risk weightage assets, like how much risk is associated by this loan. So one important component of MCLR is risk, that how much risk is involved while providing the loan. That is why it is another rate of interest which is utilized by a bank to provide loans in the market, especially to the corporate loan. ये इंप्लीमेंट हुआ आपका 1 अप्रैल 2016 से. बैंक कैन नॉट प्रोवाइड लोन लोअर देन एमसीएलआर. एमसीएलआर से नीचे आकर बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते. सिमिलरली बैंक कैन नॉट प्रोवाइड लोन लोअर देन एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट. तो उसके नीचे जाकर लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते. These are the two different rate of interest which are available in the market. No need of doing the calculation of MCLR, that how to calculate MCLR. Don't run into that calculation part. Don't waste your time. Nobody is asking you in the examination that how to calculate MCLR. कोई नहीं पूछ रहा है. Not in the interview they are asking you how to calculate MCLR. Don't worry. What is MCLR? Sir, MCLR is the minimum cost of fund based lending rate, which is a minimum rate of interest decided by a bank for the different duration provided to provide the corporate loans. So all the corporate loans are linked with the MCLR. This much is enough to explain to anyone. They will be happy enough when you will explain like this. ठीक है, पॉइंट क्लियर है. MCLR का डेफिनेशन ढूंढोगे और कैलकुलेशन वाला पार्ट मिलेगा, तो डोंट रन इनटू दैट. डोंट वेस्ट योर टाइम. ठीक है, परेशान मत होना, उसमें टाइम वेस्ट मत करते रहना. So 1st of April 2016 MCLR was implemented in India. It's a retail loan provided by external benchmark rate, and this MCLR is linked with the corporate loan. ये आपका corporate loan से linked होता है. अभी न्यूज क्या है? What is the current news? Recently State Bank of India increased their MCLR. So they increased the SBI increased the MCLR by 5 to 10 basis point. MCLR increased to 4.81%. कहाँ गया? ये है, यहां पर है. So MCLR increased by 5 to 10 basis point. 5 से 10 basis point से MCLR increase हुआ है. It will be applicable from 15th of July. So it is ranging from 8.5%, 8.35% for 1 month, then 9% for 3 years, including 8.4 for 3 months. No need to learn these different rate of interest. फिर से बता दूं, ये अलग अलग rate of interest याद करने का जरूरत नहीं है. In the exam, they are not going to ask you what is the MCLR of State Bank of India for 3 years. ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है. So don't worry about that. ये भी नहीं है पढ़ने की जरूरत. What is MCLR? Point number 1. SBI increased their MCLR for around 5 to 10 basis point. MCLR increased by State Bank of India. Or which bank recently announced to increase the MCLR? Full form of MCLR. ये वाले क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे. Yes, every bank have their different MCLR. हर बैंक का अपना खुद का MCLR होता है. Every bank have their different rate of interest, lending rate, which is based on benchmark rate, external benchmark, but rate of interest will be different. So home loan in BOB will be available at different rate of interest compared to SBI. तो हर बैंक का MCLR अपना अलग है, हर बैंक का अपना खुद का
रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड दैट इज डिफरेंट। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। नाउ हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर कॉर्पोरेट लोन। This MCLR increment will increase the rate of interest for corporate loan. Education loan, home loan, car loan, personal loan will not get affected by this. तो मैं रिपीट कर दूं, ये होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन जैसे लोन्स को इंपैक्ट नहीं करने वाला है MCLR का इंक्रीमेंट। सो इट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट अस। बोलो यस और नो। पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर है पॉइंट? So MCLR was introduced from 1st of April 2016 से इंट्रोड्यूस हुआ है। SBI increased the MCLR, the reason being net interest margin of State Bank of India came down from 3.58% to 3.43% in March 2024. So net interest margin जो था वो SBI का क्या हो गया था? कम हो गया था। That is why it has been increased. Your SBI have increased it. So interest on, जो आने वाला इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट ऑन माइनस इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन माइनस इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, ये नीचे आ गया था इनका। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिविजुअली याद नहीं करना है, दैट व्हाट वाज द MCLR फॉर दिस मंथ, व्हाट इज द MCLR फॉर दिस मंथ, नो यूज। चलिए अपॉइंटमेंट पर आते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक अपॉइंटेड एक्स IDBI एग्जीक्यूटिव मिस्टर अरुण बंसल एज द न्यू CEO। सो न्यू CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ, किसने अपॉइंट किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। RBI अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ Mr. Arun Kumar Bansal as the managing director and CEO of which bank? Paytm Payment Bank. So Paytm Payment Bank stop its operation? Answer is no, it's working and it will bounce back. वापस आएगा, फिर से बाउंस करेगा, अभी भी काम कर रहा है स्लोली अंडरग्राउंड, प्रॉपरली वर्क कर रहा है बैंक। So Paytm Payment Bank is going to bounce back very soon. 19 Communication का सब्सिडरी है। मिस्टर बंसल रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेड ऑफ ट्रेजरी एट IDBI बैंक। ही इज गोइंग टू रिप्लेस मिस्टर सुरेंद्र चावला। एंड पेटीएम पेमेंट बैंक है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। तो न्यू CEO है मिस्टर अरुण कुमार बंसल साहब। KP शर्मा ओली अपॉइंटेड एज द नेपाल प्राइम मिनिस्टर फॉर 4th टाइम। चौथी बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में इलेक्ट हुए हैं मिस्टर KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली and Ramchandra Paul, the president Ramchandra Paul, in front of President Ramchandra Paul, KP Sharma Oli have taken the oath on the position of Prime Minister of Nepal. So for the 4th term, the Prime Minister of Nepal is Mr. KP Sharma Oli. It's good that you need not to learn the new name. Government appointed Mr. Robert J. Ravi as the new CMD of BSNL. BSNL के नए CMD अपॉइंट हुए हैं Mr. Robert J. Ravi, and he is having 34 years of experience in the telecom sector, replacing to Mr. P.K. Parvarsar, who was leading the BSNL from long back, around 8 to 10 years से तो मैं नाम पढ़ ही रहा हूँ P.K. Parvarsar का on the position of CMD of BSNL. So भारत संचार निगम लिमिटेड फाउंडेड ऑन 15th of September 2000 में फॉर्म हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाउंडर है। न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ BSNL। BSNL का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंडिया टीवी हेड मिस्टर रजत शर्मा अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन। सो न्यूज ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूज ब्रॉडकास्टर इन इंडिया। मतलब जितने भी न्यूज चैनल्स हैं ना आपके इंडिया में, जितने भी हैं, उन सबका एसोसिएशन आप बोल। सो एसोसिएशन ऑफ ऑल द न्यूज मीडिया चैनल्स इन इंडिया, that is your news broadcaster digital association. Head of this organization will be Mr. Rajat Sharma. तो रजत शर्मा साहब को इसका नया प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया है। He will be replacing to Mr. Avinash Pandey. Avinash Pandey, who is the CEO of ABP Network.
तो एबीपी नेटवर्क के जो सीईओ हैं अविनाश पांडे, उनको रिप्लेस कर रहे हैं कौन? मिस्टर रजत शर्मा। इजी टू रिमेंबर फॉर एग्जाम एज वेल। इजी न्यूज है, कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा न्यूज है। ठीक है, चलिए आगे आगे पॉइंट पर चले, नेक्स्ट पॉइंट करें। अभी बीएसएनएल अपनी टेलीकॉम सर्विस अभी प्रोवाइड करती है। अरे अरे बढ़िया चल रहा है, बीएसएनएल ग्रो कर रहा है बहुत ज्यादा। चलिए वापस आते हैं न्यूज पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड आईएनएस टावर इन मुंबई। व्हाट इज दिस आईएनएस? इट इज इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सेक्रेटरिएट हेडक्वार्टर बिल्डिंग of Indian Newspaper Society inaugurated by PM Modi. What is this Indian Newspaper Society? Indian Newspaper Society act as a central organization for the press of India. So for the newspapers, for journals, periodicals which are get printed and broadcasted in India, not broadcasted, get printed and circulated in India. So for them, the head agency is called Indian Newspaper Society. Indian Newspaper Society founded in the year 1939. 1939 में फॉर्म हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र इनका हेडक्वार्टर है, and this headquarter building have been inaugurated recently. The new headquarter building have been inaugurated recently. So it is Indian Newspaper Society Secretariat headquarter building in Mumbai, that is Bandra Kurla complex, inaugurated by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी ने भी नया बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के। पॉइंट क्लियर है सर? बोले यस और नो? क्लियर? चलिए आगे मूव करें। नेक्स्ट वन, मिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड PM College of Excellence in all 55 district of Madhya Pradesh. So it was a news we read from long back that Madhya Pradesh government is in a process to develop PM College of Excellence in every district of Madhya Pradesh, in all 55 district. So they converted the existing government colleges of the cities in the form of PM College of Excellence. तो एक तरीके से जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनको रीनेम कर दिया गया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हुआ है, उनको रीनेम करके उनका नाम कर दिया गया पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। So in all 55 districts, this PM College of Excellence inaugurated. Question in the examination will be who have inaugurated this. So Mr. Amit Shah inaugurated this. It will be based on the vision of Prime Minister Narendra Modi to make the nation developed nation by the year 2047 and national education policy. And the education is going to play a very important role into that. मध्य प्रदेश इज वर्किंग ओवर इट। तो अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है, 55 डिस्ट्रिक्ट्स में इनॉग्रेट हुआ है। 55 इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश लोकेटेड एट प्रेजेंट। हरियाणा कैबिनेट अप्रूव्ड आईटी सक्षम युवा स्कीम टू प्रोवाइड 5000 जॉब। कितने लोग हैं भाई? हाँ, फटाफट से हाथ रेस करेंगे, हैंड रेस करेंगे। हरियाणा वाले, एमपी वालों से पूछना भूल गया था। So Haryana cabinet approved IT Saksham Yuva scheme to provide 5000 jobs in the IT sector. So it was actually announced by the previous chief minister of Haryana in the last budget. It was an announcement by the previous chief minister. So Manohar Lal Khattar Saab have announced this, that they will be providing the job. 5000 youth in the first phase. The total target is 60,000 youth. Total target is 60,000 youth. 5,000 will be targeted in first phase. So it is their announcement is for the budget year 2024-25, providing the employment to total 60,000 individual from the poor families. This is the announcement. Current chief minister is नायब सिंह सैनी सर। अभी करंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह सैनी सर हैं। नायब सिंह सैनी सर हैं, ये करंट में चीफ मिनिस्टर है। अभी इसमें होगा क्या? So the graduate and postgraduate from the IT background will undergo for specially designed short-term course by Haryana IT program. Haryana IT program जो है, इन्होंने 3 months का एक मिनिमम प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया है। During this program 20,000 रुपये का स्टाइफन प्रोवाइड किया जाएगा for the first 6 months. Minimum 3 months है, it will be extended. For the first 6 months, minimum 20,000 rupee will be provided and after that 25,000. So IT सेक्टर में जो है जॉब्स के साथ आप देखो सैलरीज का भी एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा अगर ये सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हो गया।
that at 20,000 25,000 इंजीनियर्स विल बी अवेलेबल। तो 25,000 गवर्नमेंट बनाकर दे रही है आपको कि 25,000 रेडीमेड इंजीनियर, आईटी इंजीनियर विल बी अवेलेबल एट 25,000 रुपी पर मंथ। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने कहा है इफ यू विल नॉट गेट जॉब इवन आफ्टर दिस 3 months ऑफ ट्रेनिंग देन 10,000 रुपी विल बी प्रोवाइडेड। अगर 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी जॉब नहीं मिली, घर पे बैठो 10,000 रुपए मिलेंगे आपको। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हरियाणा गवर्नमेंट है उनका, कैबिनेट ने अनाउंस किया है। आईटी सक्षम युवा स्कीम है, टोटल 60,000 यूथ को इसमें टारगेट किया गया है। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज है डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024। डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 आईआईटी दिल्ली टू होस्ट रोबोट कंपटीशन इन एसोसिएशन विद प्रसार भारती। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, it is associated with one of the international challenge or international competition. So IIT Delhi in collaboration with Prasar Bharati going to host 2-day robot competition called DD Robocon India 2024 from 13th of July. It will be conducted in New Delhi. New Delhi में इसको conduct किया जा रहा है। Now the winners of this DD Robocon India winners are going to represent India. They will be representing India at International Asia Pacific Broadcasting Union Robocon 2024. So International Asia Pacific Broadcasting Union Robocon 2024, that will be conducted in Vietnam end of year 2024. Here representation of India will be done by the winners of DD Robocon India 2024. I hope my statement is clear. What is the overall meaning? तो आपके पास 2 venues पूछे जा सकते हैं, who have conducted, that can be asked. So DD Robocon India, IIT Delhi in collaboration with Prasar Bharati conducted in New Delhi. Winners will represent India in, एक और बार रिपीट कर रहा हूं, in International Asia Pacific Broadcasting Union Robocon 2024 that will be conducted in Vietnam. तो ये हो गया आपके पास एक पॉइंट। क्लियर है? जाग रहे हैं सारे लोग? बोलो यस और नो। हाँ, जाग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। इंडियन सैंड आर्टिस्ट मिस्टर सुदर्शन won the International Sand Sculpture Award Championship 2024 that was conducted in Russia. रशिया में कंडक्ट हुआ था। सुदर्शन पटनायक सर हैं, वन ऑफ द वेरी फेमस पर्सनैलिटी। इट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड टू गिव हिज इंट्रोडक्शन, नेम इज इनफ। सुदर्शन पटनायक, so he have won the Golden Sand Master Award 2024. It is an international championship that was conducted in Russia. He is already awarded with the Padam Shri Award, which is the 4th highest civilian award in the year 2014. 2014 में पद्म श्री से इनको ऑनर किया जा चुका है। Indian Air Force participation in the exercise Pitch Black 2024. So Indian Air Force participating in the defense exercise Pitch Black 2024 hosted by Royal Australian Air Force at the base Darwin in Australia. तो ऑस्ट्रेलिया में जो डिफेंस एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेट किया था। एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री, पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम 20 कंट्रीज, over 140 aircraft, approximately 440 military personnel from the various forces will be participating into this. तो आपको नाम याद नहीं रखने हैं, that how means which nation participated into this. More than 20 participating from 20 countries. So 20 countries are participating into that. Name is exercise Pitch Black, conducted where in Australia. Australia में conduct हुआ है, and it is a defense exercise of Air Force. ये याद रखना है। So Indian Air Force have participated into this. Then World Youth Skill Day 2024 was observed on 15th of July. 15 जुलाई को ऑब्जर्व हो रहा है आपका World Skill Youth Day 2024. Theme is Youth Skill Peace and Development, for the Peace and Development. ये आपका थीम है 2024 का। ये आज के लिए आखिरी न्यूज था। सो पीएनबी एसओ और एनआईसीएल एओ इसके बैच लाइव हैं, यू कैन ज्वाइन द बैच। प्लीज लाइक द सेशन, इंपॉर्टेंट है। आज कोई पेड सेशन नहीं है एंड इट्स बर्थडे ऑफ माय किड टुडे, सो आई विल बी स्पेंडिंग रेस्ट ऑफ द डे विथ हिम।
तो आज कोई सेशन नहीं है, विल बी मीटिंग बैक टुमारो मॉर्निंग 8 AM अगेन। कल सुबह वापस से मिलेंगे 8 बजे इन TN, एंड टुमारो ऑल द लाइव सेशंस एंड पेड सेशंस विल बी शेड्यूल्ड ऑन टाइम। तो कल सारे क्लासेस पेड वाले आपके टाइम पर शेड्यूल्ड है, ठीक है। चलिए मिलेंगे सेशन में वापस से कल सुबह 8 बजे। डू नॉट मिस द सेशन। आई विल बी मीटिंग यू बैक tomorrow morning same time. Till that time, keep watching Oliveboard, guys. Jai Hind. Take care.